P3 इंटीग्रेशन अभी हमने एक्सपोनेंशियल फंक्शंस किए हैं एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर्स के साथ. अब लॉगरिथमिक करने जा रहे हैं. लॉगरिथमिक के लिए आई विल टेक यू बैक इन टू वेयर वी हैड द रूल्स. रिविजिट कर लेते हैं. दिस इज़ द रूल दैट वी हैड कि जो आप जिस चीज़ का इंटीग्रेशन करने जा रहे हो, अगर डिनोमिनेटर में जो फंक्शन है उसके इंटीग्रेशन ऊपर मौजूद है तो आप सिंपली डिनोमिनेटर फंक्शन के साथ ln लिखो प्लस c लिखो, आपका इंटीग्रेशन हो गई. राइट. तो लेट्स ट्राई दिस ओवर हियर. द क्वेश्चन इज 2/x. पार्ट ए करें. सो कैन आई राइट इट लाइक 1/x. 2 को बाहर कॉमन ले लिया. ठीक है. अब व्हाट इज, लेट्स पुट दिस इनसाइड अ बॉक्स. इसकी इंटीग्रेशन क्या है, इसकी डिफरेंशिएशन क्या है? 1. इज इट प्रेजेंट अप हियर? इट इज़. राइट. तो इसका क्या हो जाएगा? सिंपली 2 एज इट इज क्योंकि बाहर था. और ln of x प्लस c. डज दिस मेक सेंस? ln of x प्लस c. लेट्स ट्राई दिस ऑन पार्ट बी. पार्ट बी में आप क्या कर सकते हो? फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले तो 4 को बाहर ले जाएं तो वी हैव 1/2x प्लस 1 dx. अब डिनोमिनेटर में जो फंक्शन है, लेट्स पुट दैट इनसाइड अ बॉक्स. इसकी डिफरेंशिएशन क्या होगी? 2. Is 2 up here? No. What are we going to do? Let's try this again. 1/2x plus 1. अब ऊपर 2 इंट्रोड्यूस करने के लिए क्या करना पड़ेगा? इंटू 2. और बाहर हमारे पास क्या था? 4. और हमने जब 2 इंट्रोड्यूस किया तो बाहर उसके रेसिप्रोकल इंट्रोड्यूस कर देंगे. उससे क्या होगा कि बैलेंस आउट हो जाएगा जो हमने अंदर 2 इंट्रोड्यूस किया और ये dx आ गया. नाउ लेट्स राइट दिस अगेन. ये कैंसिल कर लेते हैं. वी हैव 2/2x plus 1. डज दिस मेक सेंस? इज द इंटीग्रेशन ऑफ दिस एक्सप्रेशन, सॉरी डिफरेंशिएशन ऑफ द एक्सप्रेशन अवेलेबल अपसाइड in the numerator? Yes. It is, right? So we can continue with the integration. क्या क्या चीज़ें डिसअपीयर होती हैं इंटीग्रेशन के अंदर? ये the differentiation and dx sin. तो क्या था? 2. और इसका हमने रूल क्या सीखा हुआ है? ये रूल लिखा हुआ है ln 2x plus 1. कि ये डिनोमिनेटर में आ जाएगा, ये ln के साथ लिखा जाएगा जो डिनोमिनेटर है. दैट्स कैन बी ln 2x plus 1 plus c. Simple. The third question that we have over here is similar. Let's try that. Once again, let's write 6 outside. We are left with 1/2 minus 3x and dx. Now is the differentiation of the denominator. Let's put the denominator inside the box. इसकी इंटीग्रेशन क्या होगी? डिफरेंशिएशन सॉरी क्या होगी? -3. Whatever is next to the variable वो नंबर रह जाएगा बिकॉज x की पावर 2 नहीं है तो वो चला जाए, ख़त्म हो गया. अब इज़ -3 प्रेजेंट इन द न्यूमरेटर? नो. तो यहीं पे लिख लेते हैं. व्हाट आर वी गोइंग टू मल्टीप्लाई इट विद? -3. और उसको कैंसिल आउट करने के लिए बाहर -3 से डिवाइड कर देंगे. राइट. अब इसको सिंप्लीफाई करो तो बाहर क्या रह गया? -2. एंड इनसाइड वी हैव -3/2 minus 3x. Do we have the differentiation of the denominator present in the numerator? -3 है, बिल्कुल है. अब आप इसकी इंटीग्रेशन कर सकते हो. इंटीग्रेशन का हमारा रूल क्या है कि अगर इस तरह डिफरेंशिएशन डिनोमिनेटर वाली चीज़ की एक्सप्रेशन की डिफरेंशिएशन न्यूमरेटर में अवेलेबल हो, जस्ट राइट दैट थिंग नेक्स्ट टू ln और प्लस c. सो दैट इज़ आवर आंसर. लेट्स कंपेयर आवर आंसर्स. 2 ln x plus c, 2 ln 2x plus c, -2, and do not forget to put the brackets. 2 minus 3x plus c. Second question, if you notice something, we have the same rule that we had over here, but there's a slight difference. Now we have the absolute value signs. Why are they there? Same rules, but why are they there? Because modulus is usually present in the integration when we have some defined limits for that integration. Take a look over here. If I were to solve this, what I can do is I can throw the 6 outside. This is going to be 2 minus 3x dx. What is the function that is present in the denominator? 2 minus 3x. What is the differentiation of that function?
We can only apply the concept of ln or log once we have the differentiation of that function present in the numerator. What's the differentiation? Minus 3. -3. Do we have -3 over here? No. So what are we going to do? We will write this as it is. Introduce times 3. Since we multiplied it with 3, what are we going to do in the what are we going to do outside the integral sign? Divide it by 3 to balance the things out. So what do we have in the new denominator now? 2 minus 3x. Now pay close attention. Since now we have the differentiation of the denominator present in the numerator, we are good to go. We can apply the rule. What does the rule state? Let's simplify this first. The rule states, take a look over here. Whenever the differentiation of this is present in the numerator, just write ln, the denominator, and plus c. Make sure that whatever you're writing is in brackets. Since the denominator was 2 minus 3x, this is going to be in absolute value signs now, right? And we are going to apply the limits which are from 2 to 3. What do we do now? ln 2 minus 3 into 3 and close that, minus ln 2 minus 3 into 2, and we're going to close that sign. Now I'll tell you what happened. Once we plugged in 3 over here, and this is what I've written down, we've closed that bracket and then we subtracted. That's the basic rule of limits. Then we plugged in 2 in the same expression again. So we have 2. That's what we took common, right? Sorry, we had to introduce a minus 3. We had to introduce a minus 3. Apologies. So we'll be dividing it with minus 2. Minus 3. This will become minus 2. So we have ln. What's inside the absolute value sign? 2 minus, this is going to become 9. 2 minus 9 minus ln of 2 minus, this is going to become minus 6. Then we've got minus 2. ln of 2 minus 9 is negative 7. Absolute value of that is 7 minus ln of 4. 2 minus 6 is negative 4, but absolute value of that is 4. So you got minus 2 ln 7 minus 2 plus 2 ln 4. We can rearrange that and write 2 ln 4 minus 2 ln 7. We can take 2 common, and then we've got ln 4 minus ln 7. Whenever we have subtraction, to logarithms getting subtracted, to ln's getting subtracted, what can we write it as? 2 ln 4 over 7. Whenever they get added, they're getting multiplied. Whenever they're getting subtracted, they're getting divided. So we ended up with our answer, which is 2 ln 4 by 7.